Hello everyone. We were studying understanding quadrilaterals and we have seen parallelogram, kite and some few more quadrilaterals. So to continue with that, we'll be doing question number 8 and 9 today of exercise 3.3. So this question says, question number 8 says the following figure guns and runs are parallelogram, find x and y. तो यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ ये एक पैरेललोग्राम है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर इन द गिवन फिगर. टू सॉल्व दिस हम लोगों ने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया गन्स. तो यहाँ पर गन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन दैट गन्स इज अ पैरेललोग्राम और GU का वैल्यू दिया हुआ है 3y - 1, UN का वैल्यू दिया हुआ है 18, NS का वैल्यू दिया हुआ है 26 एंड SG का वैल्यू दिया हुआ है 3x. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. So since this is a parallelogram, we know that the opposite sides of a parallelogram are equal. So GU must be equals to SN. The value of GU is 3y - 1 and SN is 26. So 3y - 1 is equals to 26 and we will solve this and get the value of y as 9. Similarly, SG must be equals to NU, opposite side of the parallelogram. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 18. विल सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एज 6. सो इन दिस मैनर वी कैन solve this kind of question using the properties of parallelogram. Now comes the next question, question number 9. Here in the given figure there are two parallelograms, risk and clue. So these are the two parallelograms and we need to find the value of x here, x given over here. So we can see RISK, risk is a parallelogram and CLUE, clue is another parallelogram. So to solve this again, first we will draw the figure and see it is given that risk and clue are the two parallelograms. We know that the opposite angles of a parallelogram are equal. So if this angle is 70 degree, so this angle ESC must be equals to 70 degree opposite angle of the parallelogram. So we have written here CES must be equals to 70 degree opposite angle of the parallelogram. Also we know that this angle K and this angle S, that is ESI, ये angle, this angle and this angle SKR, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम रिस्क का. तो इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा. सो वी रिटेन angle RKE plus angle ESI equals to 180 degree co-interior angles. The value of RKE is given 120 degree, so the value of ESI on solving will get 60 degree. So we have got the value of ESI as 60 degree and SEC as 70 degree. We can see that here a triangle is being formed, triangle OES. ये एक triangle है और हम लोग को पता है किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम 180 डिग्री होता है. तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ESO विल ऐड ऑल द थ्री एंगल्स विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी विल पुट द वैल्यू SEO as 70 डिग्री, ESO as 60 डिग्री एंड EOS as x. इन दोनों का वैल्यू अभी हम लोग ऊपर फाइंड किए थे और ये x हम लोग को फाइंड करना है. तो 70 plus 60 plus x must be equals to 180 degree. We'll solve and get the value of x as 50 degree. So this is how we solve questions based on the parallelogram using the properties of the parallelogram. I feel you all would have understood. Still, if you all have any doubt, do ask me or contact your respective teacher. That's all for the day. Thank you everyone.